Okay. Good morning to one and all. In the last lecture, we have talked about the classification of the polymer. I'm audible? Yes, sir. Yes. Hello. Okay. In that, we seen the different types of the polymer according to the origin, means the source from which they obtained. Second, we have talked about the or a backbone, then thermal response. Okay, and last one is based on the physical properties, and very much important question which comes in the theory exam for the 5 marks is nothing but a difference between the thermosetting and the thermoplastic. It is very much important as far as the exam is concerned. 5 points are required for that. Just I am sharing the screen and screen visible. Hello. Yes, sir. Okay, difference between the thermoplastic and the thermosetting plastic. Now we first of all we will categorize thermoplastic, then the thermosetting plastics. What is basically this particular? Basically, these two polymers are differentiated on the basis of their method of preparation also. Thermoplastics are prepared by addition polymerization, whereas the thermosetting plastic can be prepared by or say formed by condensation polymerization. See, if the addition reaction is there, it will gives you the just the long chain. You know, add होते जाना है. ओके मतलब एक दूसरे मोनोमर को एक दूसरा मोनोमर क्या होते जाएगा, कनेक्ट होता जाएगा, and it will gives you the chain, long chain. सर Okay. आपकी शेयर्ड स्क्रीन नहीं दिख रही है. हेलो. सर स्क्रीन बिल्कुल नहीं नहीं. विजिबल. किसी का और प्रॉब्लम है स्क्रीन का? हाँ सर. हाँ सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नहीं आ रही है. Okay, again I will share. Now it is visible. No, sir. नो It सर. is visible. नो सर. No, sir. Just I taken SY lecture, it was visible. Okay, now we will continue. That we have already started and we have seen this particular classification of the polymer. The very much important that question I said come in the exam is the thermoplastic and the thermosetting plastic. Now basically these two plastics are differentiated based on the method by which they are prepared. Okay, first one is the thermoplastic is prepared by addition polymerization, and thermosetting plastic is prepared by the condensation polymerization. Okay, then if the addition reaction is there, I said कि monomer join together. अभी एक मोनोमर ज्वाइन हुआ है, दूसरा एक दूसरे से ज्वाइन होने के बाद तीसरा उसको आके ज्वाइन होगा, चौथा उसको होगा, एंड सो ऑन. तो दैट गिव्स द लॉन्ग लिनियर चेन. ओके, और यहाँ पे थर्मोसेटिंग जो रहता है 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक नेटवर्क ज्वाइन बाय द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड. The third point of difference is they are readily soften on hitting because secondary forces between the chain easily broken. Thermoplastic क्या होते हैं, easily soft हो जाते हैं. Okay, और thermosetting plastic जो है they are not softening on hitting because there is a cross linkage and strong covalent bonds are there. Okay, they retains their strength on hitting. Okay, then thermoplastic can be softened, reshaped and reused by the reheating to the suitable temperature. Thermoplastic को हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, reshape कर सकते हैं, reuse कर सकते हैं. Okay, और इधर thermosetting plastic can't be reshaped and reused because they do not soften on heating and retain their shape and structure.
The next part is the next fifth point is they are generally soft and less brittle, whereas thermosetting plastics are hard and more brittle. टूटते हैं, ये generally टूटते नहीं. थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिक्लेम फ्रॉम द वेस्ट. हम वेस्ट से उसको रिक्लेम कर सकते हैं मगर थर्मोसेटिंग को नहीं कर सकते हैं. ओके, 7th पॉइंट, दे कैन डिसॉल्व इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट thermosetting plastics are insoluble in almost all organic solvents. एग्जाम्पल आपको दिया है पॉलीथीन, पीवीसी, यहाँ पे दिया है epoxy प्लास्टिक, वल्कनाइज रबर एक्सेट्रा. आपको मालूम है टायर, टायर को हम रिगेन नहीं कर सकते ना, एक बार फूटा टायर खत्म ऐसे में, तो उसको रीशेप नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते. ऐसे में टायर किससे बना होता है आपका, टू व्हीलर का या कोई बाइक का या कोई व्हीकल का, वो वल्कनाइज रबर से बना होता है. ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी से जो 4 टाइप है वो बचे हुए थे, इलास्टोमर, इलास्टिक, प्लास्टिक, फाइबर्स एंड लिक्विड रेजिन्स. में तो इलास्टोमर क्या होते हैं, दे आर द पॉलीमर इन विच द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड बाय द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर forces which permits the polymers to be stretched. Then a few cross links are introduced between the chains to help the polymer retract to its original position after the force is released. एग्जाम्पल आपको दिया है इलास्टोमर और इलास्टिक, वल्कनाइज रबर है, नेचुरल रबर एंड सिलिकॉन रबर, ये 3 टाइप के रबर है. नेचुरल रबर आपको मालूम है रबर का पेड़ आता है. ओके, वल्कनाइज रबर मतलब उसको प्रोसेस वल्कनाइजेशन उसका करने के बाद उसको हीट किया जाता है. ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, and then it gives you the hard that particular type of the rubber that is used in the tires and all these things. Okay, plastics क्या होता है, these polymers are much more stronger than the elastomers and rubbers. Some of them are hard, rigid, stiff and dimensionally stable. Some of them may be soft and flexible. Example, polyethylene, polystyrene, etc. आपको मालूम है पॉलीथीन इलांगेट होते जाता है, फ्लेक्सिबल रहता है. फाइबर्स, दे पोजेस द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई. आपको मालूम है फाइबर तो अभी डे टू डे लाइफ में पॉलीमर का इतना यूज बढ़ गया है कि पॉलीमर रिप्लेस द मेटल, आई मेटल को रिप्लेस कर दिया है. हर चीज पॉलीमर की है. तो जनरली फाइबर्स आप देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स जो वायर्स रहते हैं आपके, वो भी फाइबर है ना, दैट इज एन पॉलीमेरिक मटेरियल. दे पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द हाई that particular modulus because of the strong intermolecular forces like the hydrogen bonding which operate in polymers. They have close packing of the chains and possess crystalline nature. They show sharp melting points and these polymers are used for making the fibers. Example, nylon, terylene, etc. Okay, आप देखे होंगे वायर्स वगैरह जनरली जो रहते हैं फाइबर के रहते हैं. Then liquid resins, polymers are used as the, अभी आप एडेसिव्स यूज करते, सीलेंट्स यूज करते, जो पेस्टिंग के लिए मटेरियल यूज करते, दैट इज अगेन द पॉलीमर. Okay, that is in the liquid form, belongs to this class. Example, epoxy adhesive, polysulfide sulfide sealants. जो भी adhesive sealant चिपकाने के लिए जो भी गो जाता है, that is a liquid resin. Okay, this part was left from this classification. Okay, here we have finished that. उमर कुछ प्रॉब्लम है इसमें? तंजील, उमर? No, sir. ओके, इसमें कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क. इफ यू एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क. Okay, one more that important